Hey, hi guys. Thank you for joining today in this connect. Let me check just quickly on the audio part. Is it connected correctly? Yes, I think it is fine. Thank you so much for today's time. And today I am going to discuss about Chat GPT. One of the एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ because when I actually experience it, there are a lot of ideas were popping up. ठीक है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, what not. Okay, so from there I actually took some time, pause करा, फिर इसको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करा. ऑल्दो इट इज़ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, मैं बता दूं आपको. इन द सेंस माई लर्निंग, ओके, नॉट चैट जीपीटी तो जो कर चुका है दैट इज ऑल्सो इनफ इफ वी कैन एक्सप्लोर एंड यूटिलाइज दैट प्रॉपरली. बट मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी कम है क्योंकि जस्ट आई एम स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर टूल एंड इन द मीन टाइम आई वांटेड टू शेयर दैट क्या है एग्जैक्टली, तो आप इसको भी जान पाओ. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले. मैं अभी जस्ट राइट अवे मैं इसका क्वेश्चन सेट कर रहा था कि क्या क्या चीज एटलीस्ट डिस्कस होने से द अदर पर्सन हुएवर विल बी लिसनिंग दिस वुड बी हेल्पफुल टू देम. ठीक है, देखो जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और ये भी एक फन पार्ट बता दो, ये क्वेश्चन भी मैंने चैट जीपीटी से ही कलेक्ट करा. सो एंड आई विल शो यू ऑल्सो कि कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जितना हो सकता है मैं आपको शेयर करूंगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है. ठीक है, देखो सबसे पहले दीज आर द क्वेश्चंस आई हैव आउटलाइन. मैं इसको एडिट भी नहीं करा, एकदम रॉ है, रफ है, जैसा होना चाहिए. आई देयर इज नथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन इवन ऑन दिस राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच. ये सारा क्वेश्चन है और मैंने सारे का सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी मैंने कैप्चर करा है. ये सारा कपल ऑफ देम आर आल्सो आई ऑब्जर्व दैट आर रिपीटेटिव क्वेश्चन. सो जो कि मैं ऐसे ही बाय डिफॉल्ट कवर कर दूंगा, बट दीज आर द क्वेश्चंस आई वांटेड टू एड्रेस. ठीक है, बहुत सारा मैंने कैप्चर किया. इतना अगर जान जाते हैं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिएशन हो जाएगा. ओके, ठीक है. सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस पार्ट, रेस्ट ऑल मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ. So if I capture this, as you can see, total approx आप पकड़ के चलिए 10 प्लस 15 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन में भी रिपीटेटिव होगा. ठीक है, so what is चैट जीपीटी? चैट जीपीटी है क्या? ओके, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग. आपको भी थोड़ा बैकग्राउंड हो गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली चैट जीपीटी. ठीक है, अगेन दिस वट एवर आंसर आई एम गोइंग टू शेयर फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, और इसको और भी द मोर वी विल एक्सप्लोर तब और जान पाएंगे. लेकिन मैं बैकग्राउंड बता विच इज कांस्टेंट. जो मैं बता रहा हूँ दैट विल बी द लाइक कांस्टेंट थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी ऑफ चैट जीपीटी और मे बी अदर वर्जन विच विल बी रिलीज इन फ्यूचर. तो इसमें क्या है चैट जीपीटी? सबसे पहले अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा, ये कुछ नहीं, एक लैंग्वेज मॉडल. ओके, सो नथिंग यू नो नीड टू लाइक थिंक की समथिंग विच वी कैन नॉट रिलेट एंड अंडरस्टैंड. तो एक लाइब्रेरी है, और अदर और भी सिंपल टर्म में जाऊं तो ये एक डिक्शनरी है. इन्होंने एक पूरा डिक्शनरी काइंड ऑफ मॉडल तैयार करा है जिसके थ्रू अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में, उसको ये रिप्लाई कर सकता है, उसको ये इंटरप्रेट कर सकता है, उसको ये रिप्लाई कर सकता है. दैट इज व्हाट द हाई लेवल. अगर मैं वन वर्ड में एकदम बेसिक, जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, उसको अगर मैं बता पाऊँ कि मानिए ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही है. चलिए मॉडल बोलूंगा तो भी आप अगर उस बैकग्राउंड से नहीं रिलेट कर पाएंगे. ये एक सॉफ्टवेयर है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको यूज कर रहा, पता है. इन दिस सॉफ्टवेयर क्या है, ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है सारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग, और वो जो भी लैंग्वेज है ना वो पूरा फीड इन किया हुआ है. अगर कोई क्वेश्चन आप करते हैं, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन वो उसका कॉन्टेक्स्ट को पता करेगा एंड इट विल सर्च इट. तो इफ आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं इफ आई से दिस इट इज एडवांस टाइप ऑफ सर्च, क्या ही वो गलत होगा? ये गलत नहीं होगा. अगर मैं एडवांस मतलब इसमें बहुत सारा नुआंसेस और पैरामीटर और ऐड कर दीजिए. गूगल सर्च ही है ना, लेकिन उसमें बहुत सारा नुआंसेस पैरामीटर ऐड कर दीजिए, तो अगेन द आउटपुट विल कम इन द सेम वे. ठीक है, लेकिन वो लाइक हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल सर्च इंजन एंड दिस, ये भी क्वेश्चन एड्रेस कर देंगे. देखिए सर्च इंजन क्या है ओवरऑल, ये आपका बेस्ड ऑन रैंकिंग, पेज रैंकिंग आपको ये रिप्लाई करता है. ये लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके वो आपको रिप्लाई इस लेवल में नहीं कर सकता जिस इफिशियंसी से चैट जीपीटी करता है. तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सर्च इंजन अभी बोल दे रहा हूँ, अभी बोल दे रहा हूँ चैट जीपीटी, डोंट वांट टू कंफ्यूज. बेसिक ये लैंग्वेज मॉडल है through which it understand the context of the language and it can interpret the language. and बहुत सारा यूज केसेस मैंने कैप्चर करा है. दोज यूज केसेस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, तो आपको पता चलेगा कि किस किस यूज केसेस में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ये overall if I say again, it is a statistical model that calculate the probability distribution over a sequence of word. exactly मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने एक बुक से कैप्चर करा है, एंड बुक का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ.
with this book. From this book I capture exploring Chat GPT 3. Okay, by Steve and Brett. Okay, I was just searching the author. कहाँ पे है तो yeah, so from this book I refer it and I observe this very nicely. It is explained बहुत सारा example and I can share those example also. But it is nothing but a statistical model that calculate the probability distribution over a sequence of word. In other words, GPT-3 system for guessing which text comes next and when text is given as an input. तो जो भी इनपुट मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन इट कैन इवेलुएट एंड रिप्लाई कर सकता है. नाउ इसके अगर इफ वी गो फर्दर वी लिटिल बिट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि एनएलपी होता है क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एज अगेन आई ऑब्जर्व दैट एनएलपी एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि फोकस्ड है नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ताकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस उसको इंटरप्रेट कर पाए. तो ये एक लाइब्रेरी है, मॉडल है, आप कुछ भी कर लो. ये हेल्प करता है, एनएलपी हेल्प करता है कंप्यूटर्स को लैंग्वेज जो बोला जाता है, पूछा जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए. दैट इज व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज. मतलब नेचुरली इट इवेलुएट दैट लैंग्वेज एंड रेस्पॉन्ड यू बैक. ओके, इसका बहुत सारा, दिस इज वेरी ब्रॉड कैटेगरी. मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, आई हैव मेक इट सम नोट आल्सो. बहुत सारा, देयर आर 3 or 4 टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. उसको भी टच बेस, नॉट मे बी इन दिस सेशन, मे बी नेक्स्ट सेशन आई कैन डू दैट. सो दैट इज व्हाट नेचुरल लैंग्वेज इज. सो ये नेचुरल लैंग्वेज का ही पार्ट है. दैट इज वन थिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ एग्जैक्टली चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जनरल पर्पस एनएलपी सिस्टम है. और इसका अगर मैं खासियत आपको बोलूं, इट इज स्टेब्लिश्ड बाय, आपको पता होगा, ओपन एआई के थ्रू इसको स्टेबलाइज, और द ओपन एआई दो ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज एक्चुअली ब्रॉट इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी. एंड थ्रू दिस इज एक्चुअली लॉन्च, और लॉन्च तो बहुत पहले ही R&D हो रहा था, बट समर 2020 को ये लॉन्च किया गया. ओके, एंड चैट जीपीटी एक्चुअली प्रॉपरली इट इज लॉन्च ऑन February 2019, but primarily it is like mainstream market में है 2020 onwards as I can find it. Another very interesting point, see, as a typically, okay, जितना हम लोग language in our lifetime can learn, chat gpt has 50, rather I will say that 10 time, okay, total 57 billion words as I was capturing this, एंड 175 बिलियन पैरामीटर्स ऑलरेडी ट्रेन, मतलब फीड कर दिया गया है चैट जीपीटी में. तो उसका वो कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है और आपको रिप्लाई कर सकता है. मतलब लिटरली आप समझिए, किसी किसी व्यक्ति को अगर इतने सारे लैंग्वेजेस पता हो और कॉन्टेक्स्ट पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं, और पंक्चुएशन पता हो, ग्रामर पता हो, देन हाउ क्विक इजीली आई कैन कम्युनिकेट, राइट? सेम थिंग. तो इसमें जितना एक टिपिकल यूजर एक लाइफ टाइम में लर्न कर सकता है, 10 टाइम कंपेयर टू, आई विल, यहाँ पे एक ऑप्शन है चैट जीपीटी, ओके, जितना टाइम एक ह्यूमन लर्न कर सकता है एंटायर लाइफ टाइम में, 57 टाइम मोर वर्ड इसमें ऑलरेडी फीड इन कर दिया गया है. मतलब मैं अगर मेरे लाइफ टाइम में अगर जितना भी वर्ड सीखूंगा, लेट्स से 10 बिलियन, एंड इट कैन लर्न मल्टीप्लाई बाय 57. ओके, सो 570 बिलियन वर्ड्स ये सीख ऑलरेडी इसमें डाल दिया गया है. 57 टाइम ज्यादा लैंग्वेज के बारे में इंसाइट इसमें दिया हुआ है. So overall, what is ChatGPT? I hope it is now clear. That is first point. Second point is how does ChatGPT work? Very very interesting, right? थोड़ा सा मैंने इसको बैकग्राउंड तो टच करा हुआ है कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज है, मॉडल है, जिसमें लैंग्वेज को फीड इन किया गया है. और फिर अगर मानिए आप ही को कोई लैंग्वेज पता है, एनी लैंग्वेज यू नो ऑलरेडी, और उस लैंग्वेज के बेसिस पे आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो अगर मुझे वो लैंग्वेज पहले से पता है, उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, उसका सारा बैकग्राउंड पता है, तो आई कैन एबल टू रिप्लाई इट, राइट? तो वही हुआ है इसमें भी. वो मॉडल में पूरा पूरी आपका, लेट मी सर्च समथिंग, अगर मैं आपको कुछ दे सकता हूँ. ओके, सो इसको बोलते हैं चैट जीपीटी. ओके, जस्ट आई एम ट्राइंग टू सर्च, गूगल कर रहा हूँ मैं. डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, दैट इज फॉर श्योर, वो सही है, बट आई एम ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम, ताकि उससे हम लोग इसको रिलेट कर पाए कि कैसे ये
चैट जीपीटी कोई भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करता है। और जीपीटी बर्ट, बर्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट है चैट जीपीटी कैसे ये काम करता है। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च इट। Okay, so it's not like I cannot go that much deeper, but I have to search how exactly, if it is available, I can at least touch base. ठीक है, okay, I will maybe I will search and add into the description so that you can process and learn it, but I haven't explored it yet. So एक workflow होता है कि some language you give, based on that language library model जो backend में है उसके basis में it will evaluate that particular language, and after that evaluation it will actually make sense of that particular language whatever has been fed into it, and then it responds back. ये पूरा search करता है. Computation power is massive in the backend which is required to search the entire that much text. Then आपको कस्टमाइज करके स्ट्रक्चर करके आपको ये रिप्लाई करता है. हाउ डज चैट जीपीटी वर्क? ये तो वर्कफ्लो, विद द वर्कफ्लो आई नीड टू हाईलाइट इट, बट इन ए हाई लेवल इफ आई से you provide a language, it refers that library to understand the context, in which context you are trying to ask that question, and based on that it search the response for you. After searching, again it structure that response the way you have asked the query, and then it represent in a high level, very very high level, maybe 1 or 2% ऐसे ही मैच होता होगा. इतने डीपर में भी we can go and we can look into that, but that's how it is typically works. Okay, और any language library कोई भी query it's similar, मैं how I am referring it's like a SQL query itself. ठीक है, उस तरह से आप देखिए, आप क्वेरी करते कैसे रिप्लाई करता है वही करता होगा, बट ये क्या है, लैंग्वेज मॉडल में क्वेरी करता है. दैट्स द कोर डिफरेंस व्हिच आई कैन थिंक ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज चैट जीपीटी अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट और रिमेंबर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन. देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था. फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी जब दिखा रहे हाउ डू यू एक्सेस, ये तो बेसिक क्वेश्चन है राइट, ये आपका एक्सेस है. ओके, तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. दिस इज हाउ यू कैन हैव दिस. मैं ये आपको शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन रेफर इट आल्सो. तो ये लिंक आप इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक, इन दिस लिंक यू हैव टू फीड इन द लॉगिन. जैसे आप कोई भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो, यू डोंट नीड एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेस एज ऑफ नाउ दिस कम्युनिटी वर्जन ऑफ चैट जीपीटी. व्हाई कम्युनिटी वर्जन? बिकॉज इट हैज आल्सो सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन व्हिच आई एक्सपीरियंस, एंड फर्दर मोर आई नीड टू गो थ्रू टू अंडरस्टैंड दैट. मैं उसको भी बारे में टच बेस करूंगा. But ChatGPT can understand the context. Yes, it can understand fairly, like simple context, whichever I have observed so far. Those contexts, it is easily able to relate as of now, and it can understand it and respond you back. So मैं एक example देता हूँ. Okay, ओके, विथ एग्जाम्पल ओनली. दिस इज चैट जीपीटी, और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट किया था. एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मैं एड्रेस करने वाला था, याज कॉल चैट जीपीटी. ये क्वेश्चन मैं क्या है, मैं टच बेस कर देता हूँ सिंस इट इज आई एम हाईलाइटिंग. इज फाइन ट्यून, क्या हम लोग चैट जीपीटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? द आंसर वाज यस, हम लोग चैट जीपीटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. कि ये ऐसा लाइब्रेरी, मानिए द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली एग्जांपल दिया गया है. तो चैट जीपीटी में मैंने जो लैंग्वेज दिया है, यू नो ऑलरेडी नाउ हाउ मेनी 57 टाइम मोर देन ह्यूमन कैन लर्न, एंड एक्सप्लिसिट नंबर्स भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, एंड दीज ऑल टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. सो आई एम नॉट रेफरिंग समथिंग विच इज from my end itself. These are all things you will find in the technical document itself. ठीक है, now content roughly 57 billion word. now वो 57 billion word generalist है. मानिए there are certain process, let's say shipping industry, or let's say legal industry, and I am going to converse on the legal aspect of it. Let's say अभी तक जितना like cases have been stored so far across globe, right, and judgment of those cases, if I able to digitize them and feed into this language, natural language library, then if I ask any question कि इस तरह के context में क्या judgment हुआ था and what was the case, आप बताइए, it will be able to search through that and it will respond you back. That's the example. So question was what, can I customize the chat GPT? The answer is yes, हम लोग इसको customize कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइब्रेरी दिया गया था, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हम लोग को यूज करना पड़ेगा, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन लाइब्रेरी.
नाउ द क्वेश्चन इज, और इस तरह के क्या क्या लाइब्रेरीज हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन कस्टमली इसको ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर स्पेशलिस्ट in something and they have already explored something, some artifact they have created their own which nobody knows और outside view वो available नहीं है. These are all like public data set feed in है, ऐसा नहीं कि private data set. So if some company wanted to improve their data based on the like typically on the private data set, then they can feed in that particular library and do that as well. Heading back to the previous question which I was referring, okay. Now the previous question, if I go back, the question was context, and remember the background is yes, it can understand the context. जो भी इसमें फीड इन किया गया, अगर नहीं भी है तो भी हम लोग अगर इस पे डेटा फीड करते हैं उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, देन ऑल्सो इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रेफर द सेम. Okay, so that is also very very important. Another is what is the purpose of ChatGPT? Okay, now uh, like what is the purpose of learning any language? To understand, structure things, store it, retrieve it, communicate it. These are the uses of a language. Typical uses of a language. अगर ये typical uses of a language है, then ChatGPT ये सारे फीचर्स को होस्ट कर रहा है. होस्ट कर रहा है मतलब प्रोवाइड कर रहा है. So it can understand the context, it can fetch the data, it can understand the instruction you give it to it, it can search and structure it and retrieve it for you in a form the way you have asked it for. Okay, so how can ChatGPT be used in real world application? So that's how we can consume this particular option or platform in a real world situation. Next question is, these are the question done, right? Next question is, if you go, how can I access, okay, how can ChatGPT be used in real world application? इसी का मैं एग्जांपल दे रहा था that whatever wherever language का utility होगा, real example couple of are there which I have drawn already, capture कर रहा हूँ. Text generation. If I'm giving an idea, it can generate a text. Thus, objective or there are 10 ways it can use. You can use. I have make a note of it. So, in fact, I can write it here also. Text generation hai. Then there is a content creation, idea generation, list generation, quiz generation, summarizing text. We can do all this activity. We can also do transforming text. Text को हम लोग change भी कर सकते हैं, translate भी कर सकते हैं. Transforming means translate भी कर सकते हैं. टेक्स्ट को हम लोग क्लासिफाई भी कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इट इज, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं. ओके, बैच क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफाई भी हम लोग कर सकते हैं. देन विच इज मोर पॉपुलर एंड वेरी वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल इज सिमेंटिक सर्च. मतलब आप कॉन्टेक्स्ट दे दो, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सर्च करके बता देगा. ये सारा यूटिलिटी रियल टाइम यूज केसेस यूटिलिटी है, एंड वी विल सी कपल ऑफ देम. मैं कपल ऑफ देम का एक एग्जांपल कैप्चर करूंगा, मैं उसको भी कवर करूंगा एंड आई विल शेयर दैट. But these are the ways we can use ChatGPT overall, guys. ठीक है, और I created this list. I created this list just to do practically. I wanted to highlight this. ठीक है, that was my objective. But anyway, I highlighted this, and later on we'll go in detail of it. Okay, how can I access or use ChatGPT? I already highlighted ये link है. Once you go to this particular link, you log in there, you will be able to access ChatGPT platform, and there it's kind of a comes as a chat option, and whatever you chat in here, whatever you ask question, जैसे text generation, एक example मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. Okay, tell me more about ChatGPT. ठीक है, tell me
more about GPT, more about ChatGPT. Let's see. So I have asked this question and see, now it is prompting. Now I can define also key in 500 words, in 100 words, in 80 words. Based on that, it will respond me back. And this is, by the way, there is no spam. Okay, so it is not, if you cross check with any like duplicate of this language and all, you will not be finding those. It is a replica of any particular other article. It is actually consuming that from that library and restructuring it and then writing it here. Okay, so there is a word I'm not able to recollect. ओके, प्लेजरिज्म, तो प्लेजरिज्म इसमें आपको नहीं मिलेगी. ओके, ये एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो जस्ट हैव ए लुक, टेल मी मोर अबाउट चैट जीपीटी. सारा कुछ in a high level it has already highlighted. Now ChatGPT is a large scale language generated model developed by OpenAI. It is based on GPT, which is GPT means generative pre-trained transformer architecture, and it trained on a, okay, diverse data set of web pages, books, and other text. ChatGPT is designed to generate human-like text, making it useful for a wide range of natural language tasks such as language translation, language summarization, text completion, and conversion generation. देखिए ये बाकी को मैं कैसे पढ़ता हूँ. Select this and then right click. There is an option called read out loud. So अपने ऑब्जर्व करा in high level it has already highlighted what exactly ChatGPT can do, right? तो अनदर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव आउटलाइन एंड उसका आंसर यहाँ दे दिया गया है ऑलरेडी कि किस तरह से मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ. एनीवे आई विल कम बैक टू दिस, बट यहाँ बता दिया गया है एपीआई के थ्रू हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं. सो हाउ कैन आई एक्सेस चैट जीपीटी ऑल्सो, आई होप इट इज क्लियर. Now moving to how does ChatGPT work and what is the technology behind it. I already touch base guys in a good number, rather say in high level, कि पूरा बैकग्राउंड क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से ये काम करता है, हम लोग उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे. हाउ डज ChatGPT वर्क ऑल्सो एक हाई लेवल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है. अनदर पॉइंट एक बताऊंगा कि सी नाउ दिस इज, ये तो एक प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली वहां है, डायरेक्टली वहां मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अगर इसको इनडायरेक्टली यूज करना चाहता हूँ, मेरे एप्लीकेशन मैंने एक बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ. आंसर यहाँ पे दिया गया था, ओपन एआई एपीआई. आप एपीआई के थ्रू वो क्वेरी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. यू कैन सेंड दैट क्वेरी वाया एपीआई एंड यू विल रिसीव द रिस्पॉन्स वाया एपीआई. एंड आपको वो सर्विसेज, जो सर्च कैपेबिलिटी सर्विसेज है, कॉन्टेक्स्ट सर्विसेज है, आपको डायरेक्टली आप इसे कंज्यूम कर सकते हो. बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. इफ यू नो अबाउट एपीआई तो आप जानते होंगे कि यू हैव टू पास दैट मैसेजेस, ओके, गेट और पोस्ट, गेट पुट पोस्ट. सो बेस्ड ऑन दैट आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट रेस्पॉन्सेस यू कैन कंज्यूम दैट इन योर application, software, whatever technology or whatever platform you want to consume it. That is the background of this particular question. Okay. Now, can ChatGPT understand the context and remember the previous conversation? I think मैंने इसको touch base कर दिया है. यही वाला question repetition है. Delete this part. This is a repetition question, repetitive question. Fine. What is the purpose of chat gpt and what kind of task can it be used for. मैंने ये भी आपको touch base कर दिया that chat gpt, the purpose of chat gpt is to understand the textual based text input based question and respond to it. तो आपने यहाँ देखा, अगर कुछ भी अभी तो एक आपने पॉइंट देखा. नदर इफ आई वांटेड टू गिव एनीथिंग, लेट्स से ओके, टॉप 10 बुक्स ऑन एनएलपी, लेट्स से आई एम राइटिंग इट. ठीक है, अब बताएं. नाउ यू कैन आस्क दैट what is the difference between search engine and in this, right? I can add more context to it. Just programming language ही अगर मैं आपको बता दूं, okay, ओपन एआई का, ओपन एआई का मैं और चैट जीपीटी का एपीआई कोडिंग स्ट्रक्चर मैं पूछता हूँ इससे. ठीक है, ओके. सो हैव अ लुक, चैट जीपीटी एपीआई कोडिंग
इट विल गिव सम कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट, ब्लैंक तो नहीं देगा. ओके, जस्ट आई हैव रिटन दिस कीजिए, कॉन्टेक्स्ट ये समझेगा, फिर इसको निकालेगा. ओपन प्रीवियसली एन इजी टू इंटरफेस एंड चैट जीपीटी मॉडल. ओके, कोडिंग स्ट्रक्चर, लेट्स सी. या लुक एट दिस. लिटरली ये कोड लिख के आपको बता दे रहा है कि दीज आर द कोड आई हैव टू एंटर, दीज आर द कोड आई हैव टू राइट, दीज आर द कोड आई हैव टू, यहाँ जो भी ब्रैकेट में है दोज आर द वेरिएबल्स आई नीड टू पास. बाकी सारे का सारा इवन यहाँ पे कमेंट भी दे दिया गया है, व्हाट इज दिस, वाया दिस पर्टिकुलर कोड आई कैन इंटरैक्ट with this OpenAI API and get my queries answered via it. तो आपने एक एग्जांपल आपने देखा, राइट, लिटरली राइटिंग द कोड. मैं वहां सिर्फ ये जो कोड है ना, आई विल रिप्लेस दिस विथ माय वेरिएबल व्हाट एवर आई एम डूइंग, एंड इट विल बी एबल टू give me that background right away, और give me that ready to use some kind of synopsis. ऐसे तो बैक पूरा ब्लैंक था, लेकिन मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में ये बैकग्राउंड मेरे को दे दिया. व्हाट इज द पर्पस नाउ. नाउ इमेजिन, एक आपके पास पूरा लाइब्रेरी, यूनिवर्स ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल, और एक्सप्लिसिट लाइब्रेरीज है, 10 साल का हिस्ट्री बुक है, सॉरी 10 साल नहीं, 1,000 years का हिस्ट्री कंटेंट इज पुटेड देयर. We can literally ask to create a structure of it, that when in history what are the core disasters that happened, which year, what was the context. If it is written in those books, it will able to fetch, and as a structured manner it can post it. Just imagine how powerful it is. Imagine it is literally like artificial intelligence, where imagine पूरा एक manual book of rockets science का मैंने train करा है, and then I'm start asking question on rocket science, so some kind of problem I'm asking which needs to be solved, and based on the context of various book it is given, तो वो fetch कर सकता है, and that data it will represent. That is massive work itself, guys. Massive work, right? that is, these are few example. अगर हम लोग अभी ये general, you observe like GPT, right? You observe that meaning of that GPT, right? यहाँ पे chat में दिया हुआ है. तो now it is general purpose. ओके, चैट जीपीटी इज, सॉरी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटिव. जनरेटिव, अगर इसको स्पेसिफिक बना दिया जाए विथ द स्पेसिफिक इनपुट ऑफ पर्टिकुलर डोमेन, then it will be able to solve massive problem which nowadays knowledge workers are doing. Knowledge workers, KPOs में क्या होता है, right? They response on medicine transcription, they transcript those medicines, or they are doing much more like complex work, where we have to first of all search something, and understand the context and the reply. वो सारा काम इससे करा जा सकता है. We can identify, एक टेक्स्ट दे दिया, बोलेंगे इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर मैंने ट्रेन कर दिया कि ये अगर वर्ड रहा तो, और इतने साल में वर्ड रहा तो, देन विल नॉट गिव हिम क्रेडिट. अगर कहीं पे लिखा है लोन है, ड्यू है, ये वर्ड है, डोंट गिव क्रेडिट. These are again very, I will say, very bad example, to be honest, because ChatGPT's capability is much more broader and deeper. Okay, मैं जो बोल रहा हूँ तो बहुत सिंपल हो, नॉर्मल एनएलपी से ही वो बन जाएगा. I don't have understanding at this stage that how deep this technology could be done. मैं तो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जितना मैंने जाना है that is I am sharing with you, right? I hope it is clear, guys, कि क्या पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटीज आई कैन कीप ऑन स्पीकिंग. ओके, पॉसिबिलिटीज ऑन नेचुरल लैंग्वेज रिलेटेड कहाँ से करते हैं पॉसिबिलिटीज, राइटिंग वाला जो भी काम हो गया. लेकिन यही है कि देन अगेन वी हैव टू री रिव्यू इट एंड क्रिएटिवली एडिट इट. इमेजिन कोई प्रपोजल है. ओके, जैसे मैं एक प्रपोजल हमेशा लिखना चाहता हूँ. लेट्स से राइट ए प्रपोजल on, let's say, automation, or let's say machine learning. I'm going to present or propose a client with machine learning services, what kind of services I can provide. अगर मैं यही बोल देता हूँ ना, तो भी मेरा ये डिटेल्स वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देगा, प्रपोजल बना के दे देगा. ना वो प्रपोजल को मैंने रीड करा, और मैंने बेस्ड ऑन दैट उसको रिप्लाई करा. सी, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी यूज केस ऑफ दिस लेटर सेशन. मैं तो अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ यूज केस, एक एक यूज केस हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मोर कि इसके बियॉन्ड और क्या किया जा सकता है. एंड देयर इज वन गाइड बुक ऑल्सो, आई विल शेयर यू दैट लिंक, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. फेयर इनफ. नाउ हाउ एक्यूरेट इज चैट जीपीटीज लैंग्वेज जनरेशन. देखिए, ये मैं पढ़ रहा था इसके बारे में थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां दिस टॉपिक इज कवर्ड. आई विल टेल यू, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. ओके, सो इट्स कॉल्ड, so we consider when the build application ChatGPT, we need to consider how application could be used, wrong purpose necessary and step prevented.
Okay. Okay, so there is already certain guidelines are there. चैट जीपीटी हैज क्रिएटेड ऑलरेडी गाइडलाइन क्या क्या गलत हो सकता है. दो गलतियां व्हाट आई ऑब्जर्व यू कैन कॉल इट एज लाइक लिमिटेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ एक्यूरेट इज चैट जीपीटी डिपेंड ऑन हाउ क्वालिफाइड डेटा आई हैव प्रोवाइडेड, हाउ क्लियर डेटा आई हैव प्रोवाइडेड. अगर मैंने एकदम स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड किया और टू दी पॉइंट डेटा प्रोवाइड किया, इट शुड बी एबल टू गिव यू. See, these tools never give 100%. 100% is okay, it is like over expectation. You can expect चलो 90. Again completely depend on the data which is given. तो इसमें कुछ मैं नंबर तो नहीं बता पाऊंगा because I have not explored that and that is also not found somewhere. Completely depend on which kind of query. But मैंने बहुत सारा वेग क्वेश्चन भी पूछा है. इट डिक्लेयर्स कि इसका जानकारी मेरे पास नहीं है. आई डोंट नो अबाउट दिस. ओके, प्लीज बी मोर स्पेसिफिक. तो ये ऐसा रिस्पॉन्स कर देता है. लेकिन जितना हो सकता है जो जानकारी दे रहा, दैट इज आई हैव सीन इज consistent based on the data feeding. Now, a very interesting point. Since it is trained on the बहुत important point, this is most important point people need to realize and understand that in this particular platform जो data provide किया गया है, based on that only it is responding. अगर गलत data दिया गया है, then it response will be also incorrect. So now if you ask question that how accurate is ChatGPT's language generation is to find that the response which you received based as a language, as an output, that accuracy I cannot say. But language generation is definitely, it's like based on the input provided, and it is pretty good so far. But I cannot quote in a number as of now. Okay, we need to explore further. अभी तो ये initial stage में है, but we can dig deeper into it and find out कि क्या है, what is the number accuracy percentage of these output of the result, and definitely there would be kind of other parameter through which we can see, right? Since it is again it is statistical, right? Probability बता देगा कि इतना परसेंट तो accurate है ही है, positive है, accurate है. It will respond back, but I don't know how it is. Another is, can ChatGPT be used for natural language processing tasks such as language translation, text summarization? Yes, मैंने आपको already बता दिया. Text generation, content creation, idea generation, list generation, ये possible है. List generation का एक मैंने यहाँ क्या question है? Natural language task, language translation और text summarization. Yes, text summarization में भी ये possible है. So for example, मैं आपको एक ये एक potential malicious use हो सकता है. ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड. मतलब व्हाट इज द समरी ऑफ इट? देखिए, एक मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ. दैट टेक्स्ट आई एम फीडिंग इनटू दिस. ओके, एंड आई विल से समराइज बेस्ड ऑन ग्रेड. ओके, so if I okay, cut this part so far, go to this. Now I'm writing it here and I'm saying that जस्ट हैव अ लुक. मैंने ये कॉन्टेक्स्ट दिया, ये टेक्स्ट दिया, फिर बोल रहा हूँ समराइज फॉर ग्रेड 6 स्टूडेंट. ठीक है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया और मैं यहाँ पेस्ट कर दिया एंड एंटर कर दीजिए. ठीक है, एंटर कर दीजिए. ये इस टेक्स्ट को पढ़ेगा जो मैंने दिया और उसको समराइज कर दे रहा फॉर 6 स्टूडेंट. और वो दोनों लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे. क्या है, आई डोंट नो, इट इज राइटिंग सेम वे और थोड़ा अच्छा से एलैबोरेट कर रहा है, आई डोंट नो. So here you can see it is not hard to imagine potential malicious harm useful of ChatGPT 3. यहाँ पे बोला ChatGPT is a very powerful computer program that can understand and write in a human language. It is made by a computer called OpenAI and it can be used in many different like writing stories so and so so and so. But sometimes people can use ChatGPT in a bad way, like spreading false information or uh, okay, pretending to be a something else. Or OpenAI makes sure that people use ChatGPT for good things by checking and approving how people want to use it before they can use it. तो दिस इज द बैक. देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ कितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ये दिया हुआ है, तो ये एक समराइज कर देता है. गॉट इट? सो दिस इज अनदर यूज केस गाइस आई हाईलाइटेड. इस तरह से मैं आई वांटेड टू क्रिएट नंबर ऑफ यूज केसेस सो दैट आप उसको रेफर कर सकते हो लेटर ऑन हाउ एग्जैक्टली इट कैन बी यूज.
आई होप इट इज क्लियर. एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लैंग्वेज ट्रांसलेशन. ऑफ कोर्स लैंग्वेज ट्रांसलेशन. इफ आई से ओके आई एम जस्ट ओके, आई टुक दिस पार्ट, लेट्स से यही वाला पार्ट लिया, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. देखिए, ठीक है. देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सॉरी. ओके, सो ये वाला सिर्फ टेक्स्ट हटा देता हूँ एंड देन सर्च इट. देन सर्च इट. ओके, नाउ लुक एट दिस गाइस. सो इट इज लिटरली ट्रांसलेटिंग दैट. तो आपको एक क्लैरिटी हो गया कि इट कैन लिटरली डू एनीथिंग रिलेटेड विथ, बिकॉज इट हैज दैट नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. जितने सारे लैंग्वेज हमने अभी तक कंज्यूम किया है, दैट लैंग्वेजेस नॉलेज इट हैज, इसीलिए ये कन्वर्ट इस तरह से कर पा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एबल टू डू इट, राइट? बट यू नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, राइट, किस तरह से ये ट्रांसलेट कर रहा है ऑन दी गो. ठीक है. I hope it is helpful, guys, in all the sense you can think of at this stage. It's very, very powerful, very powerful, and nothing like it. अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, we can literally do. But only point which bothers me, I will tell you that point is that ये नया कुछ नहीं बना रहा है. नया कुछ नहीं बना रहा इन द सेंस एग्जिस्टिंग नॉलेज के ही बेस में आपको रिप्लाई कर रहा है. एंड अगर मैं हम लोग इसी को कंज्यूम करते रहे तो हमारा जो नॉलेज बेस रहेगा दैट विल बी लिमिटेड. That is I'm little bit worried about. And we will be following these texts and these scripture rather than using our brain the way we used to do till today. So that is a very, very big concern for me, and I don't know how that will be handled, but ये एक thought process था मेरे दिमाग में. Okay, so fine. Okay, let's go back to the questions. Can ChatGPT be used for natural language processing tasks such as language translation? I hope we have already addressed it. How can ChatGPT be integrated into real world application or system? I answered that also, guys. With the help of API, हम लोग इसको कर सकते हैं. API के थ्रू ChatGPT का ओपन APIs है. अगर आप सर्च करोगे इसका डॉक्यूमेंटेशन, ओपन AI का ये डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो. इनका टीम में ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू गो टू गूगल एंड ChatGPT APIs. सो इफ यू सर्च इट, आपको पूरा, ये आपको पूरा चैट जीपीटी का एपीआईज एंड इट्स रिलेटेड डिटेल्स आपको सारे कुछ यहाँ मिल जाए गाइस. तो इसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो. बहुत ही, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. सॉरी, मैं यही सर्च कर रहा था कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क, रादर देन चैट जीपीटी में देख के मैं एक्सटर्नली सर्च कर रहा था. बट दिस इज व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. कैसे काम करता है, विल गो इन टू डिटेल सम टाइम. ओके, इसके डिटेल में जाएंगे एंड इट इज एक्सप्लेन्ड ऑल्सो. एज अभी मैं इसको टच बेस नहीं कर रहा हूँ गाइस. बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेट्स हैव इट फर्स्ट. ठीक है. देन व्हाट आर द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी और अदर लैंग्वेज मॉडल. मैंने इसको टच बेस करा. इथिकल इम्प्लीकेशन, यू ऑब्जर्व दैट जो लास्ट ये पॉइंट में ही था, जो पॉइंट मैं बता रहा था कि देर इज ए गाइडलाइन ऑलरेडी प्रोवाइडेड. तो ओपन एआई ये मेक श्योर करेगा कि देयर टूल इज यूज्ड फॉर द इथिकल यूसेज ओनली. तभी जाके उनको वो एक्सेस दिया जाएगा. नहीं तो ये जनरल पर्पस जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं यही होगा. द एंड दैट्स हाउ दे विल रेगुलेट इट. और जहां भी चैट जीपीटी का टेक्स्ट यूज होगा ना, दोज आर लाइक there must be like guidelines for the same, and based on that guideline only we will be able to consume it. Okay, that's the background. Okay, so we need to cross check this कि कैसे ये possible है ना, feasible है. Okay, but that's what I can say right now कि ethical implication of using chat gpt or other language. देखिए अभी तक, the more it will mature, the more we will be able to understand the risk of it. We'll be able to define the boundaries around it. The more we know, अगर हम लोग वो नहीं जानते हैं at this stage, we'll not be able to define it. It will be too early and there will be lot of loopholes. But fundamentally, as I mentioned, already there is a there are guidelines available. Okay, how to go live with OpenAI apps. तो उसका गाइडलाइन, इथिकल गाइडलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है.
and that we need to go through and abide while creating and consuming OpenAI services. I hope it answers, guys. How can I access or use ChatGPT? This is again repetitive question. We have addressed it. Is there a way to fine tune ChatGPT specific use cases? I think I addressed this also. Based on these kind of transformer library, we can do that, guys. And there could be other libraries also. So we can ask similar libraries as. So we can ask this. Okay. ओके, आई एम जस्ट आस्किंग दिस कि इस तरह का व्हाट आर द अदर लाइब्रेरी अवेलेबल है. देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ अगेन इन चैट जीपीटी में, इट विल रिस्पॉन्ड अगेन. ये गूगल भी कर सकता था, मैं यहाँ इसलिए सर्च कर रहा हूँ. आई वांट टू हियर फ्रॉम चैट जीपीटी इटसेल्फ, और लिस्ट कर देता है. दैट इज व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट दिस. ओके, नहीं है तो भी बता देगा कि इसके पास वो जानकारी नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट कंपेयर दैट. समटाइम ऐसा भी होता है बिकॉज इट इज इवॉल्विंग राइट नाउ. दैट इज ऑल्सो फाइन, गाइज. Okay, it's thinking, taking time, let it take time. We'll move to the next case. So the point is possible. मैंने उसका बैकग्राउंड भी दे दिया कि कोई भी लैंग्वेज मॉडल को हम लोग डेटा देके, टेक्स्ट देके हम लोग उसको ट्रेन कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. हाउ डज चैट जीपीटी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जनरेटेड मॉडल सच एज GPT-2 एंड BERT? सो अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं इस टॉपिक में और डिटेल में जाना चाहता हूँ. आई डोंट नो जस्ट टच बेस, बट देर आर डिफरेंसेस. और ये डिफरेंस मैं गूगल करके आंसर कर रहा था, बाय द वे गाइस. आई ऑल्सो डोंट हैव मच इनसाइट ऑन दिस, but if I talk about that, both are different technology. Now need to go deeper to identify ki what are the core differences between it. But first good thing is there are libraries similar as ChatGPT. ये अकेला नहीं है और ये पहला नहीं है. That is good part. So there is a competition. But the negative part is also when they will lead the competition, it will be challenging for other libraries to grow sometime. Okay, that's my personal observation. So that could be a challenging part. But yes, as of now it is there. Maybe Amazon, Facebook, they're using internally these kind of library already for their own uses, internal uses. Possibility is there. Okay, so it is possible, as I mentioned. This is also done. How chat gpt can be helpful? I now you have, if you are follow throughing this till this time, you know how it can help, guys. We'll see these how it can help also in practically in the next session. I'm not, I need to prepare certain examples and all. Right away I can go in live also, but it would be good if I prepare a little bit so that I can touch base correct example for you guys. And next point is, okay, chat gpt be helpful. Yes, I have touch base. Use case of application, I have highlighted this also. Risk of chat gpt, yeah, risk, I want to touch base something. See, when there is a, based on existing input only we are doing it, the risk is of duplication, not creating new ideas, creating false information based on agar if I give garbage in, right, I will get garbage out. So if I give incorrect text, which is a lot, and when we are having this discussion, there are a lot of misinformation available, not correct information. Purposefully it is created mislead information. Now if that is available in the market, then based on that misinformation, it will be difficult to get accurate answer from this. So again, if you cannot trust, then you will not use this technology and tool, right? That is the disadvantage of it. And it can manipulate the responses also. It can heavily do that because in other platform, I know personally, it can do that. So if you're searching something somewhere else, it could be routed through, rather than highlighting the, let's say top 10 something you ask, even some values is not within top 10, it highlighted. It could be done. I don't know the background, but possibilities is there. These are the down part or challenging part of these kind of platforms, guys. Those are the risk, rather I'll say. Projected future similar solution, this I wanted to touch base in very detail, but thoda sa main bata दूं how I am seeing this kind of technology in future, guys. How I am seeing this kind of future technology. First of all, language based whatever work we do, writing से related, interpretation, queries जो मैंने बताया, okay, learning new things, summarizing it. Again, same चीज मैं repeat कर रहा हूँ. I'm repeating the same thing, right? Which is most efficiently it can do is, as of now, curation. And that
क्यूरेशन विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. आप सोच लो, कोड क्यूरेशन, इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल. आई वाज राइटिंग लॉट ऑफ कोड ऑन दिस ओनली. मैं कुछ भी कोई भी कोड इसमें बोलता हूँ ना, अब देखो ये कितना पावरफुल है. वो कोड मुझे ये रिप्लाई कर दे रहा है, जस्ट इमेजिन. सी इट रिप्लाइड दिस ऑल्सो. ये सारे लाइब्रेरीज है सिमिलर लाइब्रेरीज. आई वॉज वेटिंग फॉर इट, राइट. ये सर्च करके ये लाइब्रेरीज दे दिया मुझे. जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट गाइस. इट हैज सर्च दिस, राइट. It has searched it, and based on that search, it has provided me these responses right away. Powerful, right? So that's the overall background of this particular tool. Okay, I hope it is clear. Just have a look. I was asking a contextual question कि क्या करता है, कैसे यूटिलाइज होगा, राइट, प्रैक्टिकली. आप कोई भी कोड पूछो इसको कि हाउ एग्जैक्टली आई कैन क्रिएट ए, लेट्स से, image processing framework of Python. Okay, image optimization framework of Python. Code of image optimization, uh, sorry, image optimization, code of image optimization through Python. Okay, just I search randomly जो मेरे mind में आया, I'm just searching, and it has that data. It has data till 2021 का data है. till उसके बाद का data अभी तक इसमें training नहीं है. तो till 2021 तक का जो भी data है, that is based on that it is replying you this. And it will search that entire database और मेरे को reply करेगा. Just imagine, this is how. So technology is evolving, guys, and the quicker we understand the implication, we can be, you know, we can lead this journey. That is what is my core message is. So learn evolving technologies, understand that, understand the nuances, so that you know the benefit of it as well as the downside of it, because we need to know and have a balance, strike a balance, right? That's how I'm seeing this kind of technology. And I am really impressed. The best part is it is available for public to explore. And of course, whatever you are searching, they are, again, upgrading it further. Look at this. Okay, there are several libraries and method in image Python that can be used for optimized image. One popular library of image is called Pilio. Okay, Pillow. Here an example of how can be using. Just imagine, it is giving me a image optimization library. और image में क्या optimize करना, अगर मैं वो भी पूछूं कि I want to optimize the sharpness or edges of a particular text और text processing. मैं यहाँ image बोला, text processing ही करना था मुझे. It will provide you that. Another popular ये library सिर्फ अभी बता दी. Optimize equal to true. Optimize, अब optimize में क्या क्या function है, I have to explore further. ओपन सीवी में होता है. ओपन सीवी का एग्जांपल, लुक एट दिस. एक तो बताए, ओपन सीवी का एग्जांपल दे रहा. अनदर एग्जांपल, बैठ के हम लोग यहीं बैठ के कोड को ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग. आई एम गोइंग टू host, upcoming sessions with the help of this chat gpt itself. So that's the plan so far, and let's see how it works, because it is brilliant. I always wanted to have an companion with whom I can host, so I can literally ask question here, and randomly I'll get question, and we will explore that, right? We can explore that. Stop generating, still it is writing. Look at this. Another और एक बता रहा है. Oh, it is giving you that parameter. क्या parameter क्या होता है? Look at this. Now another, okay, OS करके बोल रहा है. This is another library. I was not aware of this, by the way. So this is the power of this kind of tool. कि आपके पास the sources are humongous, guys. If you are now, based on my experience, I can interpret this code and at least understand in high level. Even इसमें तो नोट भी दिया रहता है. यहाँ पे देखिए ये नोट दिया हुआ है. Write this image into with compression. राइट, पूरा नोट दे दिया गया है. फिर ये एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ इट इज एक्सप्लेनिंग 3 एग्जांपल दे दिया कि कैसे क्या क्या वे से ये ऑप्टिमाइज कर सकते, कैसे, हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज इट हैज दैट डेटा इन द बैक एंड.
available, and based on that open source data ये पूरा मेरे को reply कर. Still it is, see, stop generating means still it is thinking to give me reply. It is searching. If positive है तो फिर से ये और भी further ये reply करेगा. Have a look, observe this, guys. Interesting, right? This is the power of this kind of tool. Okay, I will not extend it further. Next session में I will talk about first of all real example, and और session में I will just talk about the future of this. क्या क्या किया जा सकता है, what is possible. Okay, we'll just talk about that. इतना ही अभी था इनके पास तो ये शेयर कर दिया. This is what is ChatGPT, guys. I hope you have learned at least to get started with this. Then आपका imagination you have, guys. Utilize your imagination, consume this to the extent for your benefit. Okay, बहुत creative ways में मैंने कुछ creative ways में बता दे रहा हूँ. You can practice interview with ChatGPT. You can ask interview question with ChatGPT. ChatGPT will prompt you interview question. So you, if you say that contextual, मैंने वो example मैं दिखाना चाहता हूँ. I'll touch base that. You can do that. It's like a companion buddy with you who has a lot of data about each and every field, whichever you can think of. Most likely, I don't know specific है या generic है, but है. तो आप बात कर सकते हो, discuss कर सकते हो, and you can improve your thinking process. Structure your writing also with this, right? Awesome creative uses are there. Do let me know which one you think is very cool idea and what else we can do with this based on your see. The best part about this kind of tool is that there is no limit. आपके यूसेज के as per your usage आप उसको customize कर सकते हो, use कर सकते हो. That is the advantage of this kind of tool, and I love that fact of any tool. I cannot even think the way it could be done, the way content writer can think this tool can be used. I cannot think the way a doctor can consume this, right? I cannot think a way a legal practitioner can use this. News anchor can use it, or editor can use it, right? Just think every cook, okay, how I can search some recipe, different recipe. I can ask, or not only search, why search? Okay, they don't use mostly in languages part, right? But yeah, I can search it, it can curate based on all this and it can respond back. I will be a consumer. So these are the aspect is possible, guys. I will not extend it further here. I'll pause and I share all the background. Hope it is helpful. Do let me know what is your idea, what you love most about this, if you are still making till this point, which is very rarely happens. But I am really thankful if you are still there, guys. Hope you have enjoyed the way I have enjoyed while creating this. Thank you so much for your time, and let's learn and utilize the time we have, guys. Have a great day. Bye.